I have received this air fryer. So I'm unboxing this item again now. It has come well packed in thermocol. Oh, this looks pretty big, yeah, and I got it at a real deal. So this is the electric air fryer manual of iBell. This is 8.8 liter, 1800 watt power. So online buyers may go and register online for warranty. So this is your extended warranty, 1 year extended warranty free. Okay, and how to do it, it's all here. और इसके ऊपर रखते हैं इसको. This has a cord over here. साइज में काफी बड़ा है, तो लेट्स सी फ्रॉम द फ्रंट. तो सामने से ये ऐसा है फ्रेंड्स, ठीक है, और ये इस तरह से खुलता है. काफी बड़ा है अंदर से. इट्स अ बिग वन. सो आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस टू बी सो बिग. तो मुझे लगा ये काफी छोटा होगा. अवन आई ऑलरेडी हैव, ओके, और मेरा इसका यूसेज ज्यादा नहीं होगा. दैट्स व्हाई आई डिड नॉट ऑर्डर दैट गीक वन. 11 का मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, टू मच ब्लैक. ओके, और भी निकलेंगे आगे, और भी वैरायटीज आएंगी, बेटर वर्जन्स आएंगे. सो दैट टाइम आई विल सी अबाउट परचेजिंग. राइट नाउ माय ओवन इज गोइंग ग्रेट गन्स, विच इज 52 RCSS Morphy Richards, which is almost 14 years old. So friends, here I have switched on the air fryer. So on the top you can see those preset options. Left side is for temperature, okay, and the right side up and down arrow is for the timing. And the below option, one with M and round, if you click on that, you press that, then you'll be able to use the preset options. Okay, and the second option is to switch off the air fryer. It's a very basic model and really very good. Okay, so we are warming up some pizza, leftover pizza that we had in our fridge, and it warmed pretty well. So ahead in the video, I'm going to bake something in this air fryer. You will see ahead. Rest how the usage is, you will come to know in the video ahead. Okay, and on this video also I did the restocking of my ginger garlic paste, and this is how I do it. I make the ginger garlic paste, I freeze them into cubes, and later I refill this in a container and I keep it in the freezer. This technique is a lifesaver when you want to make curry. Hello friends, I'm Gul Rajput and you are watching my channel. मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते. आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर, और आपकी दुआ से आई एम डूइंग सुपर फैंटास्टिक. सो दिस इज़ नथिंग बट स्प्रिंग रोल शीट, जिसको मैंने रोल कर लिया है एंड मैदे के साथ ग्लू कर लिया है, एंड देन आई हैव कट दिस इनटू स्मॉल पीसेस एज यू कैन सी ऑन द वीडियो. आज की जो रेसिपी है रक्षा बंधन स्पेशल है, सो स्टे ट्यून्ड. Now I have mixed certain masalas, like chaat masala, alright, some zeera powder,
ओके, लिटिल पेपर, जो भी सूखे मसाले आपके जो है ना कबर्ड में, वो सारे आपको डालने हैं। और थोड़ा सौंफ एंड सम मिंट पाउडर, दिस इज़ होम मेड मिंट पाउडर। तो बस ऑल दिस पाउडर आई मिक्सड इट, यू मिक्स इट अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन यू लाइक। फिर वही मैंने स्प्रिंग रोल लिया है और पूरे स्प्रिंग रोल के ऊपर मैंने मैदा ब्रश से लगा लिया है। एंड देन आई स्प्रिंकल्ड ऑल दिस मसाला ऑन द टॉप। यकीन माने बहुत ही बेहतरीन लगती है। एंड देन अगेन आई हैव रोल्ड इट इनटू अ पेंसिल एज यू कैन सी इन द वीडियो। बस पेंसिल के साथ रोल करने के बाद मैंने इसके 4-4 टुकड़े कर लिए हैं। यकीन माने इतनी टेस्टी लगती है, बहुत मज़ेदार लगती है। फिर मैंने एक और टाइप बनाया जहाँ पे मैंने सिनेमन, वो सिनेमन पाउडर है, और फिर मैंने पाउडर शुगर उसमें डाला है एंड आई मिक्सड इट। तो जैसे वो सिनेमन बन, सिनेमन रोल्स मिलते हैं ना, ये सिनेमन स्प्रिंग रोल्स बना रही हूँ मैं। बस सेम थिंग, वही स्प्रिंग रोल की शीट लेके मैंने पूरे शीट पे मैदा लगा दिया है ताकि ये स्प्रिंग रोल का पाउडर है ना अच्छी तरह से चिपके। हाँ, और इसमें मैंने थोड़े टूटी फ्रूटी भी डाले हैं, आप चाहे तो किशमिश भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। देखिए वो मैदा का पेस्ट पूरे शीट के ऊपर लगा दिया है। एक बड़ी बेहतरीन रेसिपी रेडी हो गई, बहुत ही बेहतरीन। एक मैंने प्लेन बनाया है जिसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, एक मैंने नमकीन कचौरी स्टाइल बनाई है, और जो थर्ड वाली है मैंने सिनेमन बंस के स्टाइल में बनाया है। तो प्रोपोर्शन आप देख लीजिए आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा कम चाहिए। बट यकीन माने ऐसी बेहतरीन बनी ना, 2 सेकंड में पूरी चट हो गई, ख़त्म भी हो गई। देखिए उसको भी रोल कर लिया है, और उसके मैंने ज़रा बड़े साइज़ लिए हैं, वो आगे आपको वीडियो में दिख जाएगा। तो एक को मैंने फ्राई कर लिया, और जो कचौड़ी वाली थी उसको मैंने एयर फ्रायर में फ्राई किया है 6-6 मिनट। मुझे 12 मिनट लगे, एक बैच को 6 मिनट और सेकंड बैच को 6 मिनट। बहुत ही बेहतरीन एट 165 डिग्री। मुझे तो बहुत मज़ा आया इसे बनाते हुए। तो रक्षाबंधन है तो कुछ फ्रेंड्स, अगर ये इनोवेटेड मेथड आपको अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू गिव योर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। डोंट गो एज येट, आगे एक बहुत ही बेहतरीन रक्षाबंधन स्पेशल खीर बनने जा रही है। यस, खीर, वेट एंड वॉच। तो बस हमारी ये टूटी फ्रूटी वाली भी स्प्रिंग रोल रेडी हो गई है। देखिए काफ़ी बड़े बड़े मैंने साइज़ के रोल्स रखे हैं। ओके, और जो कचौड़ी फ्लेवर वाली है उसको मैंने एयर फ्रायर में रख दिया है टू फ्राई। अब प्रिपरेशन करते हैं खीर की। तो जो खीर बनने जा रही है वो है मूंग दाल की, but with a twist, and what that twist is you'll come to know only in the end. So I have taken here a 1/4 cup मूंग दाल। इससे आपको 4 से 5 कटोरी खीर मिल जाएगी। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो डबल द क्वांटिटी। I will wash the मूंग दाल, add 1 glass water, and I will give this around 4 to 5 whistle. We have to make this real soft. Now let's get down to frying some of these spring rolls. Okay friends, here I completely forgot to tell that I have taken here 1/4 cup cashews and 2 tablespoons kishmish, and that I'm frying in this oil. I need this for the moong dal kheer. So I'm going to fry this and I'll keep it aside, and after that I'll start frying the spring roll. Now is the turn of the plain spring roll which we have cut into small pieces. We all know to fry, so you need to fry this really light golden. So be careful of the color. So after frying the plain spring rolls, this is how it looks. Some we are going to keep and some we will be using it as snacks. Where we will be using it, you will come to know in the video ahead. Now comes the turn of those yummy cinnamon spring roll that we need to fry. This also we will fry light golden. So here the kachori
masala wali spring roll also is ready in the air fryer. Looks pretty good. Okay, and so are the cinnamon spring rolls. Let's plate them all. Hope you enjoyed this new idea that I have shared with you. Proportions of the masala, cinnamon, sugar, it's all up to you how much you take. But do use this idea, this Raksha Bandhan, to make something different. Alright friends, now coming to our moong dal. Okay, I transferred that to a pan. Okay, and to that I added very little water, say around half cup water, and I'm giving this a very good boil. Okay, once this boils for 3 to 4 minutes, okay, we are going to add milk over here. Milk will be taking around 1 or say 250 ml. Please note, once the kheer cools down, it will thicken. But before that, to this we are going to add the fried cashews and the kishmish. Little fried cashews I've kept for garnishing. Rest all I've added to this moong dal. This is yellow moong dal. Very simple recipe. After you add the milk, give it a boil of 5 minutes. Then you need to add 2 tablespoons sugar and 1/4 teaspoon cardamom powder. Must for this recipe. Now let's plate the kheer. And now comes the time for the twist. Yes. The twist is that we are going to add to this the fried plain spring rolls. So this is a moong dal ki spring roll wali kheer. A must make. So friends, a very happy Raksha Bandhan to all of you. Take very good care of yourself. Be safe. Be happy. Good food, good mood. And until we meet next, don't forget to eat, love and pray. Bye.